And the big story is the very high temperatures that the entire country is witnessing and the acute water shortage. And with the mercury soaring, the northwestern parts of India have been the worst hit this summer. Marathwada and Vidarbha in Maharashtra are reeling under a severe drought. Let's take a look at this ground reality report on the extent of water scarcity in the region and how people are risking their lives just to get one barrel of water. Erratic monsoon, drying reservoirs, lackluster ponds and the parching heat. The big picture for the Indian farmer is grim and gloomy. More than 70% of Maharashtra is reeling under a dry spell. An agricultural state which has been the worst affected by the drought in the past few years. Water crisis has reached alarming levels, particularly in central Maharashtra's Marathwada and Vidarbha regions. These are the belts that receive much lower rainfall than areas in western Maharashtra and along the Konkan coastline. ऐसी हालत क्यों है? पानी की वजह पानी से नहीं गिराना ये साल बारिश हुई से नहीं है करके ऐसी हालत है ये. You can see over here the farm ponds have gone dry, and this is the case not only of Harshi village but whole of Marathwada. Around 52 to 60,000 farm ponds have also gone dry. In 2016, the Maharashtra government had launched the ambitious Jal Yukt Shivir Abhiyan to make the state drought-free by 2019. But the deadline has obviously not been met, with 40% of the state officially reeling from drought. The reservoirs that the state government built to facilitate irrigation failed to quench the thirst of the farms. Erratic monsoon and poor rainfall has meant that even the traditional ponds are without water, adding to the woes of the farmer. फल लाने के बाद हर दिन उसको 50,000 कितना खर्चा आता है? समझो अपने पास पानी तब उतना डाल सकता, उठाते तो पानी डाल नहीं सकता उठा के. खरीद कर जो पानी अगर डाला आपने कहीं से, जैसे मौसम्बी को आप पानी दे रहे हो खरीद कर, तो यहाँ पर खरीद कर आप पानी डालते हैं. जैसे मौसम्बी को 3,000 रुपए आपने कहा, आप उसको पानी दे रहे हो, तो इसको कितना? हर दिन 25 तो 20,000 रुपए हर दिन लगेगा इसको. ये अनार की फसल को वो आपको देने से दे सकते हैं. Betan, a town situated on the banks of river Godavari, should not have been facing water shortage. But the entire area is reeling under an acute water crisis. Farmland is lying fallow, rivers and rivulets are running dry. Helpless farmers watch their standing crops die in front of their eyes. And all of Vidarbha seems to be withering in the summer heat. 1972 was the year that saw the worst drought in Maharashtra. Next came 2013, when 1,801 villages in the state were declared drought affected. And if things don't improve over the next few days, there is a chance that 2019 drought might get listed above 2013. Most of the dams have dried up. The water storage in Jayakwadi Dam is gone in dead storage. The water has also depleted, the groundwater has also depleted. But the villagers are saying that what they are facing cannot be experienced by the people in these cities. Harshi, a village which once witnessed flourishing fruit orchards, now sits on the edge of a dismal crisis. The reality on the ground shrieks of acres of dry land stretching till the dry horizon far away. पानी के वजह पानी गिरा नहीं ये साल बारिश ने तो ड्रिप इरिगेशन लगा के रखा है, तो उसको भी पानी नहीं है ना. तो ड्रिप का क्या फायदा है फिर? कितने पौधे हैं यहाँ पर? ये 2,000 पौधे ये सब. ऐसे कितने खेत है यहाँ पर हर्षी में? तकरीबन 100-150 है सब. और सबकी हालत ऐसी है खराब? ऐसी जी. जो पानी बचाने के लिए कितना पैसा लगेगा आपको ये फसल बचाने के लिए? नहीं आप तो क्या है बचा नहीं सकते ना हम. अच्छा. आप कितने दिन रह गए?
अब तो जो होगा तो होगा ही ना। Kalyan Jadhav used to earn up to 16 lakhs with his farm produce. The colourful farm, which once thrived on its pomegranate produce, is now a parched jungle of shrubs and trees. मदद नहीं आ रही अभी तक। ये खरीफ की आ गई, मगर जो ये अनार और मौसम्बी ना, इसका बीमा हमें अभी तक नहीं मिला है इसका। आपके पास तो शेत भी है, उसमें पानी नहीं है, पानी उसमें पानी नहीं है ना। पर आपको लगता है कि सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या मौसम के कारण भी हुआ है? नहीं, मौसम के कारण। मौसम ज्यादा जिम्मेदार, सरकार नहीं जिम्मेदार। सरकार क्या करेंगे उसको? मौसम ज्यादा जिम्मेदार। सरकार ये कर सकते है कि भविष्य में क्या नदी जोड़ वगैरह है ना, वो उन्होंने करा तो फिर ये समस्या पर हल निकल सकता है। As the dry spell continues, the Jadhav family is struggling to make ends meet. They had opted for an LPG cylinder under the Ujjwala scheme, but now have returned to biofuel due to lack of money. किती महिने झाले तुम्ही सिलेंडर आणणं बंद करून टाकलं? 8 महिने. आणि पैसा मग तुम्ही काय मुलांना पाठवता? हो, मुलांना पाठव. मुलासाठी काय करायचं मग आता? शेतीत उत्पन्न नाही, घरी बसून त्याला पैसे कुठून द्यायचे? कितना साल लगेंगे वापस से? कम से कम 3-4 साल तो लगेगा। 160 kilometers from Aurangabad, the cattle market is buzzing for all the wrong reasons. बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में पानी की बहुत समस्या चालू है। हम सुबह से बाजार में बैल को लेकर आए, लेकिन कोई खरीदार अभी तक मिला नहीं। मेरे पास बैल थे, मैंने वो 25,000 में बेचे, उसके लिए वाल कोई नहीं था करके वो चीज़ें मेरे पैसों का बहुत जरूरी काम था करके मैंने वो 25,000 में बेचे। वो पानी की इतनी समस्या हमारे यहाँ कि 8 दिन में एक टाकी मिलती 200 लीटर की, उसमें क्या करना, बैलों को पिलाना कि अपन ने पीना। In Buldana district in the region, farmers are forced to sell cattle because there is no water for them to drink, and the farmers are finding it increasingly difficult to provide fodder. पिछले साल बारिश कम होने की वजह से ये इलाका सूखाग्रस्त घोषित हुआ है और इसलिए चारा पानी की समस्या है, इसीलिए लोग अपने बैल जानवर बेचने को लाते हैं और अभी बेचने वाले ज़्यादा है और खरीदार तो उतने ही हैं। The prediction of delayed monsoon and deficient rainfall are adding to the woes of the worried farmers of the state. The stark reality on the ground there is the helpless farmer, who it seems is perennially waiting for it to rain, and it never does. Once a week, the sleepy little village of Theragaon in Marathwada region's Aurangabad district comes alive. And once a week, braving the scorching afternoon sun, hundreds of villagers gather on the streets so they may survive another dry and blistering summer. टैंकर में डालेंगे, बाद में पानी आएंगे। The municipality-run water tanker is pulling up to discharge its precious load. And the buzz of anticipation and the rising of decibels are palpable. No sooner do they hear the rumbling sound of the truck, young children run behind the tanker and then climb on top of it. While their mothers cling on to these tentacles to fill their barrels. Hundreds of men, women, children with their pipes, and almost many of them are on this water tanker, and there the race begins. Each of them is racing to put his pipe in the tanker, and here you can see what they are doing. They are going to just they are going to draw the water from this water tanker, and here you can see the race has begun. आज चेहरे पे बिल्कुल मुस्कान छाई हुई है। आज बहुत पानी मिल गया हमको। टैंकर के ऊपर तुम भी चढ़ते होगे? हो। पर ऊपर तो इलेक्ट्रिक का वायर, डर नहीं लगता? नहीं, पानी के मतलब जाने पड़ता है। With just 3% water left in Marathwada dams,
Around 3,200 water tankers have been deployed to service 2,500 villages and hamlets in the region. This is also a sugarcane belt, and the cultivation desperately needs water. A situation compounded by the poor rains of 2018. इस तरह से जद्दोजहद है, एक दूसरे को पांव खींचने की बारी है, पाइप डाल रहे हैं, ऊपर इलेक्ट्रिक का करंट है। पाइप डालने से पानी नहीं मिलता ना, पाइप डालने इलेक्ट्रिक का करंट है ऊपर नहीं, इतना ऊपर नहीं जाता, लोग रोज का है उनका वो। और ये पानी कितनी देर में खत्म होता है? ये 5 मिनट में टैंकर खाली हो जाएगा। आप यहीं पे खड़े थे? हाँ, यहीं पे खड़ा था। नहीं साहब, पानी नहीं, कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, लेकिन वो जब तक आपका कुछ बैरल भर पाए आप? नहीं, 2 हांडे भर लिया है बस मैंने। The water drawn from a tanker lasts not more than 3 days of household needs, after which residents have to depend on solutions like the leakages in the water pipeline to fill their pots and barrels. Sanjana Patil was among the lucky ones to have fetched water for her family. चैम्बर से लाते, पर लोग कहते वो चोरी करते, पर चोरी नहीं करते हम, हमारी मजबूरी है, पानी नहीं गांव में तो करके वहाँ से पानी लाते हम। पानी आया तो खाना पकाते, पानी आया तो धोना धोते, पानी आया तो सब काम करते, नहीं आए तो वैसे बैठना पड़ता, कभी कभी तो नहाना नहीं होता। Theragaon is not the only village in Marathwada where people fight for water. It is not the lone village where people race for survival. 6 months of every year, 51 lakh people in the 11 districts of Marathwada have to depend on tankers for their water needs. Well, the severe water crisis that the entire country is witnessing, accompanied by the scorching heat, has indeed made life miserable. And with the country reeling under the severe heat wave conditions, the Mithilanchal belt in Bihar hasn't been spared either. Bundelkhand region is also facing an acute water shortage amid government apathy and the nature's fury. Take a look at this ground report. खंडों में खंड की भारत भूखंड की वक्त बेवक्त जिसने आवाज बुलंद की अरे This is Bundelkhand, a land steeped in culture, steeped in tradition, and also steeped in distress. तस्वीर बिगाड़ डाली मेरे बुंदेलखंड की. Politicians have come and gone, having paid their token election visits, but the soaring mercury has compounded an unceasing problem gnawing away at the region. Village after village, and not a single drop to drink. पानी पीने के नहीं मिलता है, दिक्कत ही दिक्कत है. नल पे जाते हैं तो 10, 15, 20 महिलाएं बैठी मिलेंगी, 2, 4, 4 बर्तन लिए, वही गंदा पानी पिया, उसी में गुजारा कर रहे हैं. नल का मिल गया तो नल का लिया, नल में नहीं मिला तो नदी का लाए. भ्रष्टाचार के कारण यहाँ कुछ नहीं हो सका. श्रीमान जी बस प्यासे फिर रहे हैं हम लोग. Falling along the Uttar Pradesh-Madhya Pradesh border, the Bundelkhand region cuts across several districts of both the states. In Baksha village, bordering Hamirpur and Banda districts of Uttar Pradesh, the Ken River is the only lifeline. बहुत ज्यादा पे अब क्या कर, मजबूरी में गेहूँ धोवन, दाल धोवन, पानी का ले जान ड्राम में. कुआं तो है तो अच्छा नहीं ना पानी. हाँ, इतना खराब पानी है कि तुम जुबान नहीं धर सकते हो. Bullock-drawn carts with empty barrels slowly journey to Ken every day, 3 kilometers from the village, to fill water that is hardly suitable for household chores, let alone for drinking. Some villagers even walk down to the shrinking river. 20-20, 25-25 बीघे जमीन छोड़कर अपना परिवार लेकर भाग खड़े. कई गर्भवती महिलाओं के रास्ते में गर्भ गिर चुके. 20 किलो का कंटर लेकर के जब चलना पड़ता है श्रीमान जी, तो कई औरतें यहाँ गिर पड़ती हैं, जैसे अभी बैल आपके सामने गिरा. हर घर में 2-2, 3-3 लोग बीमार पड़े. यहाँ कोई सरकारी सुविधा नहीं है श्रीमान जी.
The administration has now deployed policemen to guard the shrinking river's water from being blocked by villagers. एक समय था आज से 15 साल पहले कि कम से कम इसमें 4 फीट पानी रहा करता था। और आज दुर्भाग्य ये है कि इसमें समझ लीजिए कि पता नहीं कितना जलजीव जो है इसमें मर गया। ट्यूबवेल है, कुएं हैं, तालाब है, इनका सारा संबंध जो है वो नदी से है। चूंकि नदी सूखी हुई है, इस कारण से तालाब भी सूख जाते हैं। पानी का समाधान कर दिया जाए और खेतों को अगर पानी मिल जाए, आदमी को अगर पानी मिल जाए, तो ये जमीन सोना पैदा करने वाली। Water-scarce Bundelkhand is infamous for debt-ridden farmers committing suicide because of its infertile land and meager agricultural produce. सबसे बड़ी समस्या पानी की है, रोजगार है नहीं। ये बुंदेलखंड की बदहाली है। ये ककरीला पथरीला एरिया है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र का जो किसान है, वहाँ का 5 बीघे का किसान खुशहाल है, वहाँ अच्छी पैदावार है। और हमारे यहाँ का 50 बीघे का किसान रो रहा है, कर्ज में दबा। In times of drought, the government water tanker that arrives once in 3 to 4 days comes as a big relief for villagers. टैंकर आ जाता है तो खुश हो जाती है। खुश हो जाते हैं बहुत कि बहुत पानी अच्छा मिल गया। यह होता है कि यार नल से नल मिली, नल में भीड़ के मारे बहुत भीड़ लागत, पानी नहीं मिल, 3-3, 4-4 घंटा बैठी रहती, लड़ाई हुई जाती। Drought in Bundelkhand has been a matter of concern for decades. Every year, the story of scarcity and want replays itself, with no real solution ever in sight. Rising temperatures across the country have not spared the fertile and chronically flood-hit Mithilanchal belt of northern Bihar. Residents of the Maithili-speaking region are grappling with acute water shortage, and as the mercury soars, the situation is only worsening. In Darbhanga and Madhubani, a large number of hand pumps have failed to draw up any water because of severe depletion of the groundwater level. आदमी एक गिलास पानी के लिए तरस रहा है, दूसरे के आंगन से पानी ला रहा है। इतना तकलीफ है पानी का, कुछ कहिए नहीं। पानी का सो समस्या, हम लोग समरसेबल वाला से जा करके मांग के लाते हैं, तब जा करके पीते हैं। काम सूख गया है चापाकल सब। Once known for its thriving water bodies, Mithilanchal is now dependent on water tankers to meet their daily needs. और टैंकर एक सहारा टैंकर है नगर निगम का, उसी के द्वारा पानी दिया जा रहा है लोगों को। Mithilanchal region once had around 50,000 ponds used by people for fishing and agriculture. In the past 2 decades, thousands of ponds essential to store rainwater during the 8 dry months of the year have disappeared across Bihar. Residents blame vested interests for the dwindling number of ponds. ये तालाब हम दिखा रहे हैं, इस तालाब में आपको हम लोग छठ पूजा करते थे, मवेशी का स्नान होता था, लोग नहाते थे, सारा चीज आपको बंद हो गया है, पानी सूख गया है। जैसे कोई कोढ़ी मनुष्य, भिक्षुक, भिखमंगा, किसी को जैसे साइड कर दिया जाता है और वो उपेक्षित दिखते हैं, उसी तरह से आज तालाब बीमार और बेकार बन के रह गई है। और शहर के अंदर में इतनी बड़ी धरोहर जो पूर्वजों ने हमको दिया, आज उस तालाब को भरा जा रहा है। Bihar Chief Minister Nitish Kumar held a meeting on Monday to look into the severe water crisis in the region, even as 25 districts of the state have been declared drought-hit. इसमें अमृत योजना के तहत हम लोगों ने जो बड़ी-बड़ी टंकीज और पूरा नेटवर्क सैंक्शन किया है, उसमें 7 जगह में 5 जगह चालू हो गया है पानी। और दूसरा हमने सैंक्शन किया है सबमर्सिबल पंप और उसके साथ टैप लगाने के लिए। Caught in the middle of government apathy and nature's fury, residents are pinning their hopes on the arrival of monsoon for their water woes to end. For the residents of HUBLE in northern Karnataka, it's been another challenging year. The residents have been facing acute water shortage, and for the 4th straight year, they are relying on water tankers, which also come at a cost. Our colleague Nolan Pinto gets us this comprehensive ground report. Take a look. Northern Karnataka reeling under drought for the 4th consecutive year.
Every single day in HUBLE is now a struggle to fetch drinking water in the scorching heat. With no pre-monsoon showers, the water woes have only worsened. Women line up here at the only community tank to fill their water pots every morning. 8 दिन हो गया, आज भी तक पानी नहीं आया इधर 15 दिन 20 दिन तक पानी नहीं आता हमारा। 15-20 दिन पानी पीने का बचा होगी तो डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारियां हमारे बच्चों को आते हैं। तो 15 दिन 20 दिन कैसे स्टॉक रखेंगे पानी? पानी के लिए सेविंग करेंगे क्या खाने के लिए सेविंग करेंगे हम? ये टाइम को 15 दिन को एक बार पानी आता है इधर, बाकी टाइम बरसात को 8 दिन को 10 दिन को पानी आते हैं। In another area, residents say they are solely dependent on water tankers to meet their needs. One tanker of water costs 850 rupees. An individual has to shell out at least 30 rupees per day to get water from these tankers. That is 20% of their daily earnings. We are told that once in 10 days or once in 15 days people get water, and how not tap water but through these tankers. And that is what's happening over here. In the morning when we reached here, you can clearly see the women are actually catching water or filling their buckets or pots with water. This is what they do just once in 10 or 15 days. In the neighboring Dharwad district, farmers are in distress. They have no option but to sell their livestock. It fetches them between 40 and 70,000 rupees. The desperation has pushed them to sell cattle for slaughter too. ಈಗ 8ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೀಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಪೀಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂಗಾರಿ ಹೋಗತ್ರಿ, ಮುಂಗಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾರಿ ಹೋಗತ್ತೆ. Our next stop is Shirur village in Dharwad. This village gets its water supply from another village which is 6 kilometers away. Here is an RO purifying center. The residents here try to make use of every drop. The water that drains out of the RO unit is utilized for cleaning and washing. So they all walk bringing their these pulleys, carrying all these buckets right over here. So you can clearly see it's like a queue system. So they have to wait in line for their own chance. In a queue system, they bring their buckets, they keep their buckets, and this goes on throughout the day. In fact, as long as the RO center is open, the people will be over here so that this water that you see over here does not get wasted. And here you see this little boy who should be actually going to school is standing over here holding a bucket in order to fill water to take home. A nearby lake has been dry for a very long time. Residents allege authorities have taken money to rejuvenate the lake, but no work has taken place till now. Now, while the coalition partners are fighting each and every day and struggling to survive, the people of Karnataka, for them, it is a matter of survival on a daily basis. Now, it is stated that government's work is God's work, but clearly, for the people of Karnataka, they are under the mercy of both government and God. With video journalist Shivmurthy Gurumat, this is Nolan Pinto for India Today. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.